the newer one. And there are two technologies we should talk about, DLP and LCD. So according to our PowerPoint presentation, we are going very much right. All right. Now, second, this is the digital micromirror device we are talking about. And the projectors we are going to use with on and off state. If the light source is coming, then we should consider that this one is on, otherwise we are going to consider it as off if the light source is not coming. The third thing is what we were talking about is this DLP projector is going to cover typically 1024 gray shades can be produced, and after the gray shades the image is going to produce. So हमने इस पूरी image को देखा था. इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड है, मैंने आपको बल्ब का जरूर जिक्र किया था. This is for example from a xenon bulb. जो light है, basically light जो है वो एक xenon bulb के through condensed lens से होता हुआ color filter जाता है. This color filter हमने जो अपनी PowerPoint presentation के साथ बात की थी कि color filter जो है वो rotate करता हुआ मिलेगा. So this is the xenon bulb, the lens. This is rotating color filter. Again lens going to DMP core. So the same thing. White light. This is the condensing lens, color filter. Color filter and lens, and then DMP board. After the DMP board, if I am going to switch my PowerPoint slide, there is a lens over here, and the final output we are going to create. So the same thing is doing by this book. This is a DMP chip or DMP board. After the lens is in between the image projector, so the पूरा काम एक साथ create हो रहा है. There is an additional thing जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पे लिया मैं और ये चीज रिपीट करती हूँ मेरे साथ. DMP chip is a micro electromechanical system. MEMS. Okay, this is page number I think 112 of this book. आप लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया अपने पास, तो I believe पे 112, 111 कोई पेज है, जरा देख लीजिएगा, उस पर ध्यान से आपको ये आपको डिवाइसेस मिलते हैं. So you can study it by your own as well, because we need to have study by ourselves. आप उसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे और उसको मुझसे बात करेंगे. So MES is a technology जो कि merger है बहुत सारी चीजों. You can see the chemical, electrons are there, and it's in between a cord which is a micro mirror electromechanical system that contains several thousand microscopic mirrors made of polished aluminum material. So they polish with the aluminum material and they are working. ये जो एक साइन बना हुआ है, ये तो मुझे बताएगा इसको क्या कहते हैं? ये जो U है उल्टा सा, इसको क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता इसका मतलब. That's strange. चलें, ठीक हो गया. आपको अगर नहीं पता है, एक छोटी सी पिक्चर
फोल्डर आपको भेज दूँ, ये भी आपको भेज दूँ, पेस्ट हुआ। But what I need to find out कि ये क्या लिखा हुआ है, विजू एंड का क्या मतलब है, मैं नहीं बता रहा, ये आपको फाइंड आउट करना है। So it's smaller than the human hair, और ये हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इस पे बात कर चुके हैं। Now we are micrometers, dot micrometers, ठीक है, माइक्रो से भी कोई छोटी तो चीज नहीं, ये जरा सा चेक कीजिए। So बेसिकली हमने जो अपनी स्लाइड में कवर किया था वो पूरी चीज इस बुक में मौजूद है। Now we are going forward a little bit and going to talk about the Sham festival. So we're going to talk about the LCD display, which is the another form we have for to display it on our screen. So LCD projector and DLP projector are two different areas we are talking about. There's two different technologies we are talking about. The LCD projector depends on very bright source, white light. ये किसकी बात हो रही है? LCD. So ये क्या करेगा? इसका जो तरीका है प्रोडक्शन का या कोई इमेज को डिस्प्ले करने का, it's a little bit different. And what we are going to talk about should be from our book. So please try to be a little clear as the voice is not clear. मुझे लगता है कि मेरा ये माइक जो है ना वो एक्सपायर होने वाला है। So मैं इसका इंतजाम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ करके रखूंगा कि इसके सिग्नल्स या तो फिर ब्लूटूथ के सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं मेरे सिस्टम के पास, या कोई ऐसी बात है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ लाउडर और क्लियर और आहिस्ता आहिस्ता बात करूँ। The voice is lagging. चलो तो फिर मैं माइक को स्विच करूँ, क्योंकि अगर आवाज ही ना आए तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना क्लास में। ओके, आप बताइएगा कुछ फर्क आपको महसूस हो रहा है कि आवाज में? Is there any difference you think that right now in my voice, or is it still lagging, और भी बुरी हो गई? क्या हुआ? Very low. Okay, लो है तो लो का तो इलाज ये है कि जो हेडसेट है, मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ कि इसको इंक्रीज कर दूं। एक मिनट दीजिएगा ताकि हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, अदरवाइज क्लास में लेता चला जाऊं उसका फायदा ही कोई नहीं है। ऑलराइट, माइक्रोफोन वॉल्यूम, please do let me know that microphone volume is good. हाँ जी, वॉल्यूम कैसा है ये बताइएगा प्लीज। Is it okay? Okay, great. Now, yes, it is micro. हम इसको माइक्रोन भी पढ़ते हैं, ठीक है? So, okay, great. Now, it's अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। Liquid crystal display, the projector. This is an older technology as compared to the DLP.
technology we have studied. Essentially, this is the high intensity beam of the light passes through the LCD display and then onto a screen. How it is going to work, the principles are described here in our book. We are going to see how the book is going to discuss it, and then we are going to switch toward our aid, which is from PowerPoint, and most probably, if the time might remain a little bit, so हम किसी वीडियो की तरफ भी मूव करेंगे. We do have only 10 minutes around. All right. So what is happening? The first thing is a powerful beam of white light is generated from a bulb or LED inside the projector body. So कोई वैसे ही जैसे उसमें भी DLP में कोई बल्ब लगा हुआ था, इसमें भी कोई हाई टाइप का कोई हाई कैपेसिटी बल्ब इंक्लूड है, और उसी हाई कैपेसिटी बल्ब की वजह से आपने देखा होगा जब LCD या LED प्रोजेक्टर्स चलते हैं आपके क्लासरूम्स में या और भी बहुत सारी जगहों पर आपने अगर कहीं देखा हो, तो उनमें से हीट बहुत सारी एग्जिट हो रही होती है. तो वो बल्ब होता है असल में बेसिकली जो कि गर्म होता है और वो अपनी हीट जनरेट करता है. तो उसमें उधर उन्होंने कुछ थोड़े से फैंस लगाए हुए होते हैं जो कि हीट को एग्जिट कर रहे होते हैं वहां से. एग्जॉस्ट फैन टाइप की चीज होती है. Now, so this beam of light is then sent to a group of chromatic coated mirrors known as the dichromatic mirrors. These reflect the light back at different wavelength. अब ये wavelength मुझसे ज्यादा अच्छा आपको पता होगा wavelength क्या चीज होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है. So chromatic coated mirrors हैं. जैसे वहां पे हमारे पास मिरर्स थे जो इन्होंने कहा था हमारी बुक के हिसाब से, इन्होंने कहा था एल्युमिनियम पॉलिश्ड है. इनके मिरर्स डिफरेंट टाइप है और वो डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इमेज को क्रिएट करने के लिए रेडी बैठे हैं. When the white light hits these mirrors, the reflected light has wavelength corresponding to the red, green, and the blue light components. So again, sort of हमारे पास एक प्रिज्म लगा हुआ है और जब व्हाइट लाइट जो है उसको हिट कर रही है तो उस प्रिज्म से हम कलर्स को जनरेट करने वाले हैं. So this is as it is a previous technology. तो उसमें जो कलर्स के कॉम्बिनेशन है उनके थ्रू हम ये कलर्स को बनाएंगे. 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपको पता है प्रिज्म के अंदर जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो उन डिफरेंट कलर से जो रेनबो के कलर्स हैं उनके थ्रू हम कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. Okay, these 3 different colored light component passes through the 3 LCD screens. आपने डेफिनेटली LCD और LED स्क्रीन के बारे में पढ़ लिया होगा आपको डिवाइसेस में. So ये उसी तरह की LCD टेक्नोलॉजी जिसके बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी, LCD के ऊपर बैकलाइटिंग एक लाइट होती है, उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे काम कर रहा है. और वो colored light component passes through 3 LCD screens. Each screen is composed of thousands of tiny pixels which can either block light or let the light through. So अगर कोई लाइट को रोक लेगा तो डार्क इमेज बनना शुरू हो जाएगा. कोई लाइट को थोड़ा कम ब्लॉक करेगा तो वो कलर जो है वो डार्क शेड में आना शुरू होगा. और अगर लाइट को ज्यादा पास करेगा तो लाइटर कलर या बहुत ज्यादा लाइट को पास कर देगा तो लाइट जो है वो क्लियर या वाइट कलर की हमें मिलेगी. सो ये डिफरेंट इसके कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं आपको साथ शेयर करूंगा तो ये और ज्यादा ये बातें क्लियर होना शुरू होंगी. तो दिस इज द रेड वन, दिस इज द ग्रीन वन, दिस इज द ब्लू वन, and the mirrors are there. Light source is coming from here. यहाँ से पास ऑन होगी,
लाइट के थ्रू, और यहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी। लाइट आप देख रहे हैं इस रेड कंपोनेंट से डाइक्रोमिक मिरर्स की तरफ, और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ रही है या यहाँ से वो आगे बढ़ रही है, और मिरर के थ्रू इस एलसीडी स्क्रीन जो कि रेड वाले कंपोनेंट की है या जो कि ग्रीन वाले कंपोनेंट की है या जो कि ब्लू वाले कंपोनेंट की एलसीडी स्क्रीन है, उनके थ्रू आगे बढ़ रही है। तो हमने जहां तक अभी पढ़ा है वो इमेज के थ्रू थोड़ा सा हमें समझ में भी आना शुरू हो गया होगा। Okay, the three different versions of the same image are now produced. एक ही इमेज के तीन डिफरेंट वर्जन बने, बिकॉज रेड, ग्रीन एंड ब्लू के थ्रू, RGB के थ्रू हम अपने इमेज को क्रिएट करने वाले हैं। One is the whole image in different shades of red, one is the whole image in different shades of green, and one in the whole image of different shades of blue. Now I'm switching toward my PowerPoint slide. As you can see, 3 LCDs are here. From the light source, a mirror is applied over here, a mirror is applied for the blue, this is red, this most probably the blue, और इनमें से ये वाला ग्रीन है, पता नहीं अजीब सा ग्रीन बना दिया हमने, इसको देखेंगे चले, ये भी ब्लू लग रहा है। तो ये सारी LCDs लगी हुई हैं और ये सब अपने अपने मेन कलर्स के थ्रू चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक दिस। एक ब्लू लाइट के थ्रू भेज रहा है, इमेज ये प्रोड्यूस होगा, एक पूरी ग्रीन एरियाज को देख रहा है और पूरे एक रेड एरियाज को देख रहा है, तो सेम इमेज पूरा पूरा बनेगा। ना लेट्स मूव अ लिटिल बिट, ठीक है, हाँ जी, ओके, लेट्स मूव अ लिटिल बिट फ्रॉम द बुक बेसिकली, और फिर हम वापस अपने एड्स की तरफ वापस आएंगे। Okay, there is a lens, and then we are going to filter this entire thing, image projected onto the screen. So once the shades are produced, these images are then recombined using a special prism over here to produce the full colored image. Finally, the image passes through the projection lens onto the screen. Okay, I'm going to stop over here. These are how many points we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 पॉइंट्स एग्जामिनेशन में जंबल्ड होके आते हैं। वो आपको ये पॉइंट लिख के दे देगा इनमें से कोई भी, और इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देगा। आपसे पूछेगा पहला काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा क्या होगा, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू नंबर देम, बट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट अंटिल वी हैव स्टडीड इट ट्वाइस और थ्राइस और मे बी मोर देन दैट द वन। तो हमें इसको कई दफा पढ़ना है, और इस इमेज को ज़हन में जब तक रखेंगे आपकी सारी चीज क्लियर रहेगी कि लाइट यहाँ से चली, उसने इस रेड कंपोनेंट को हिट किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक गई, LCD से गुजरी, प्रिज्म तक आई, और प्रिज्म से लेंस में गई, एंड देन द इमेज इज प्रोड्यूस। ठीक है, बट वन इमेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस विद only one thing. I do have only 3 minutes remaining. मुझे आपकी अटेंडेंस के लिए मैंने आपसे कहा था कि सब लोगों ने अपने नाम लिख दिए थे, बिकॉज मैं चैट को जो है कॉपी करने वाला हूँ। सब लोगों के नाम इसमें आने चाहिए थे चैट बॉक्स में, तो अगर किसी का रह गया है तो प्लीज डू राइट इट। हाँ नहीं, फैसल सिर्फ प्रेजेंट नहीं लिखना, आपने अपना नाम भी लिखना है।